So my field posting started with ACUT Trivandrum. ACUT stands for Assistant Collector Under Training. I was posted in the capital district of Kerala, and I got to train under two collectors. For a very brief period, I was with Kumari Ma'am, and after that I was with Mr. Gopalakrishnan IAS, and that has been a very good learning experience. During ACUT times, you do not have much of responsibilities, rather that is taken as a learning period. So what is expected is that we continue to follow the district collector, how he deals with people, how he or she takes care of the various situations, and be it law and order, be it management of disaster, or be it the review meetings, DDC meetings, etc. So that was a very good learning experience for me. One particular challenging situation that I would want to mention is जब मैं assistant collector थी ट्रिवांड्रम में, I was given the charge of guest laborers. तो one particular day what happened is रात को हमें 10 बजे इंटीमेशन आया कि नेक्स्ट डे 10 o'clock, नेक्स्ट डे 11 o'clock हमको गेस्ट लेबरर्स की एक ट्रेन भेजनी थी और केरला से निकल के वो ट्रेन वेस्ट बंगाल तक जानी थी. अब चैलेंज ये था कि हमारे पास लगभग 12 घंटे थे ये सब इंश्योर कराने के लिए, इम्प्लीमेंट कराने के लिए. और अब जो लेबरर्स हैं वो पूरी डिस्ट्रिक्ट में किसी एक पर्टिकुलर जगह पर गैदर तो है नहीं, दे आर स्प्रेड आउट अक्रॉस द होल ऑफ द डिस्ट्रिक्ट. तो रात को 10 बजे एक अर्जेंट मीटिंग बुलाई कलेक्टर सर ने. इन दैट वी डिसाइडेड, वी डेलिबरेटेड, ब्रेनस्टॉर्म्ड एंड फाइनली चॉक्ड आउट अ प्लान हाउ वी वर टू गो अबाउट इट. तो रात को 10 बजे हमने टीम्स कॉन्स्टिट्यूट की. डिस्ट्रिक्ट को वेरियस डिविजन्स में बांटकर हमने टीम्स बनाई. इंटरडिसिप्लिनरी टीम्स थी. हर एक टीम में हमने एक पुलिस का पर्सन, एक रेवेन्यू का पर्सन, एक हेल्थ का पर्सन, एक लेबर डिपार्टमेंट का पर्सन, ऐसे डाल के हमने अपनी कई टीम्स कॉन्स्टिट्यूट की. अब इंटरेस्टिंग बात ये है कि जिन लोगों को ये काम दिया जा रहा है, जो उस टीम के टीम मेंबर्स हैं, उनको खुद नहीं पता है कि दिस इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड यू आर सपोज टू डिलीवर इट बाय 11 o'clock द नेक्स्ट डे. तो रात भर गई हमें लोगों को इन्फॉर्म करने में, उन तक ये इन्फॉर्मेशन पहुँचाने में कि आपका नाम आया है इस ड्यूटी के लिए. मॉर्निंग 6 o'clock दूसरी मीटिंग बुलाई गई जहाँ पे वी ब्रीफ्ड ऑल दीज टीम्स. रात को ही हमने सारा मटेरियल वगैरह इकट्ठा किया बिकॉज वी हैड टू डू द हेल्थ स्क्रीनिंग ऑल्सो ऑफ ऑल दीज पीपल. वी हैड टू अरेंज बसेस फॉर ट्रांसपोर्टेशन फ्रॉम ऑल पार्ट्स ऑफ द सिटी, फ्रॉम ऑल पॉकेट्स ऑफ द सिटी टू द रेलवे स्टेशन. उसके लिए अगैन नोडल ऑफिसर्स बनाए गए, नोडल ऑफिसर्स फॉर ट्रांसपोर्टेशन दिस जोन, नोडल ऑफिस फॉर ट्रांसपोर्टेशन दिस जोन, लाइक दैट. तो मॉर्निंग में 6 o'clock ब्रीफिंग दिया. वी डिस्पैच्ड आवर टीम्स and then people started arriving, guest laborers started arriving in those buses at the railway station by around 7 or 8 in the morning. अब क्या था, हमने रात को एक ऐप को डिसाइड किया था कि इस ऐप में लॉगिन करके their data would be compiled. At the last moment, when we started taking the data from the people, that app developed some snag and it malfunctioned. So why I'm mentioning this is कि in every government activity and in every project, it is very important to plan well, but it is even more important to be ready with a backup plan. Improvisation is very important. So in this particular case, हमारी ऐप ने काम करना बंद कर दिया. There was huge data to be collected. Health screening also had to be done for all the guest laborers. और उस स्क्रीनिंग का डेटा भी उनके डेटाबेस में डालना था, क्योंकि जब हम ये डेटा बनाएंगे, नाम क्या है लेबरर का, उनका सोर्स एड्रेस, डेस्टिनेशन एड्रेस, एज, मोबाइल नंबर, ये सारा डेटा जब हम वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट को देंगे तब वो उनको रीइंबर्स कर पाएंगे उनके टिकट्स के लिए. सो दिस डेटा वॉज वेरी इंपॉर्टेंट. तो हमारी ऐप ने काम करना बंद कर दिया. स्टेशन पर भीड़ इकट्ठी होनी शुरू हो गई. जितने गेस्ट लेबरर्स थे उतना ही लगभग वहाँ पे स्टाफ डिप्लॉयड था मैनेज करने के लिए. तो देन वी हैड टू इम्प्रोवाइज, वी हैड टू शिफ्ट टू द मैनुअल मोड एट द लास्ट मोमेंट. तो जिस तरीके से हमने टीम्स को बिठा रखा था कि इस गेट से लेबरर्स की एंट्री होगी, यहाँ पर उनकी स्क्रीनिंग होगी, इसके बाद हम उनको फूड पैकेट्स देंगे एंड फ्रॉम दिस वे देन दे विल बी रूटेड टू द रिस्पेक्टिव बोगीज. सो ऑल ऑफ दैट हैड टू गो फॉर अ टॉस एंड वी हैड टू इम्प्रोवाइज. द होल प्लान टुक मैनुअल मोड और क्राउड भी मैनेज किया, लोगों को ठीक समय से भी भेजा, फूड पैकेट्स वगैरह सब उनको दिए, एंड इट ऑल हैपेंड. सो द moral of the story is that in every planning, in every project, there are 3 important things to be kept in mind. One is planning, the second is coordination and monitoring, and third and most important, improvisation. Plan for the best, but be prepared for the worst. अब मैं बात करूंगी अपनी प्रेजेंट पोस्टिंग की. फ़िलहाल मेरी पोस्टिंग है तलाशेरी सब डिवीज़न में, कन्नूर डिस्ट्रिक्ट में. तो आपको बताना चाहूँगी एक सब कलेक्टर की जो रूल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होते हैं, पहली बात तो वो डिफ़र करते हैं फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट. तो एट प्रेजेंट टॉकिंग अबाउट माई सेल्फ, there are a couple of acts and rules which we have to ensure that they are implemented in letter and spirit. That forms the major chunk of my work, my routine work. So
वी हैव डिवाइडेड द डेज इन द वीक एज पर दोज सेक्शंस. उदाहरण के तौर पे वेडनेसडे के दिन हमारी CRPC की कोर्ट होती है. उस दिन द पीपल who are seen as a threat to the public peace because they have been involved in some kind of law and order activity in the past. Such cases are brought to the court of the SDM. We hear both sides of the story, the counter petitioner ka version also and the prosecution ka version also, and accordingly then we take a call. यहाँ पे एक interesting चीज़ भी होती है. Once we take a final decision, for example, a person has been found to be a threat to public peace, and therefore to avoid that kind of situation in future, we bind him down using a bond. तो जब बॉन्ड साइन करवाते हैं काउंटर पिटिशनर से, तो आई इंश्योर दैट आई गिव अ काइंड ऑफ पेप टॉक टू द काउंटर पिटिशनर. एंड आई फाउंड कि जब खासकर यंगस्टर्स से उनसे बात करते हैं कि आपने ऐसा क्यों किया, इस मारपीट में आप क्यों इन्वॉल्व थे और फ्यूचर में नहीं होना है, एट्सेट्रा एट्सेट्रा, इट हिट्स देम, you know, they get impacted. Why? It's not the charisma of the particular person who is talking. More importantly, it is this chair talking to them. So they understand what they've done is wrong, and I hope, and sometimes they say it also, that in future they will not be involved in such activities and they'll try to be a better citizen. So such kind of things are fulfilling. Other than that, we have a senior citizens tribunal over here. Senior citizens tribunal का मतलब होता है कि जो हमारे बुजुर्ग वृद्धजन हैं या फिर माता पिता हैं जिनका उनके बच्चे ख्याल नहीं रख रहे हैं, उनकी बेसिक नीड्स को फुलफिल नहीं किया जा रहा है, वो लोग आ सकते हैं और वो अपनी ग्रीवांस हमारे सामने रखते हैं. देन वी हियर बोथ साइड्स. जो माता पिता होंगे या जो वृद्धजन होते हैं उनकी भी साइड सुनते हैं और जो बच्चे होते हैं उनकी भी साइड सुनते हैं. और उसके बाद फिर दिस एक्ट, सीनियर सिटीजन्स मेंटेनेंस एंड वेलफेयर एक्ट, इज़ अ वेरी पावरफुल एक्ट. इस एक्ट के तहत आप मॉनिटरी कॉम्पनसेशन का भी ऑर्डर दे सकते हैं, दैट द चिल्ड्रन आर bound to give, they are obliged to give such and such amount of money to their parents, and at the same time if they do not fulfill their responsibilities they can be even sent to jail. So this is a very powerful act. इसके तहत हमारे पास बहुत केसेस आते हैं. यूजली हम हर थर्सडे को लगभग 8-10 केस डेफिनेटली सुनते हैं और उन पर डिसीजन देते हैं. Thirdly, another important area is land conversion. So सिंपल शब्दों में अगर बताऊं तो अगर एग्रीकल्चर लैंड को किसी नॉन एग्रीकल्चर पर्पस के लिए यूज़ किया जाना है तो उसके लिए पहले सब कलेक्टर्स ऑफिस से अप्रूवल लेना पड़ता है, एंड एन अमाउंट ऑफ फी ऑल्सो हैज़ टू बी डिपॉजिटेड टू द गवर्नमेंट बिफोर दिस चेंज कैन बी इफेक्टेड. तो इसके रिलेटेड बहुत फाइल्स आती रहती हैं, लंबा सा प्रोसीजर होता है. वी हैव टू कंडक्ट फील्ड विजिट्स ऑल्सो. साइट इंस्पेक्शन करने के बाद अगर लगता है कि इस कन्वर्शन से वहाँ के एनवायरनमेंट और इकोलॉजी को हार्म नहीं होगा, देन वी गिव दिस काइंड ऑफ डिसीजन. सो दिस एक्ट ऑल्सो इन्वॉल्व्स अ मेजर चंक of our responsibility as a sub-collector. Then there are other things such as encroachment of public land, food safety, meaning if misbranded or substandard products are being sold in your territory and the food safety officer reports them to you, then you can assign a particular fine onto the counter petitioner parties. So these are some of examples of the cases that we take up as a sub-collector. Other than that, there are myriad activities such as law and order maintenance in your area, various reviews, disaster management, especially particular nowadays COVID management. On and off there might be elections to the parliament, elections to the legislative assembly, or elections to the local bodies. So such kind of things also keep on coming, because of which our work profile is also very diversified and unpredictable. So these are some of the activities that a sub-collector is required to perform. Other than that, I would want to say that this is just the beginning. Once you begin as a sub-collector, in future you have multiple responsibilities awaiting you. Sub-collector के बाद either you will be posted as DDC, which is Deputy Development Commissioner, that is again a field posting, or an alternative is that you will be posted as a director in some of the departments, maybe Director Tourism, Director Fisheries, or a post similar to that. जैसे जैसे आप field posting से central postings की तरफ बढ़ते जाते हैं, the profile undergoes a change. So in the field posting, you are more of a people's person. It is your responsibility to interact with the public and to solve their grievances. However, as you keep on moving from the junior levels to the senior levels, your job profile becomes more of policy oriented. So instead of directly engaging with the masses, you will be taking holistic views and overall view of a particular scheme of people's needs, requirements, and you would be aiding in the formulation of policy at the state or the center level. So your jobs, responsibilities, they undergo a change, and you keep on learning from your experiences in the past. टू द एस्पिरेंट्स, आप आज के दिन प्रिपेयर कर रहे हैं तो आपको लग रहा होगा कि एक बार पेपर क्लियर हो जाए एंड यू हैव डन इट, यू हैव अचीव्ड इट. ट्रू, यू वुड हैव अचीव्ड इट इन अ सर्टेन सेंस, बट द ट्रू जर्नी बिगिंस वंस यू जॉइन द फील्ड.
once you come to the field and you get your first posting, that is where you begin to deliver as an IAS officer. और उसके बाद jobs, responsibilities, accountabilities ये सब बढ़ते ही रहेंगे and you will be gaining a whole new insight into the world of an IAS officer. So all the best to all the aspirants out there.